सो कोई डाउट जो अभी किया हमने इन लास्ट सर क्लासेस? अभी तक तो नहीं है, मतलब थियोरेटिकली तो आई हैव in fact understand much more concepts than earlier, because last क्लास में हमने जो वो किया था ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड, वो इससे पहले जब मैंने समझा था उसका मेरे को कुछ भी लॉजिक नहीं समझ आता, बल्कि आपने उस दिन जब करके दिखाया तो मेरे को थोड़ा कॉन्सेप्चुअली क्लियर हुआ, विच आई विल नॉट फॉरगेट नाउ, Which एंड आई one? वुड विच एक्चुअली अब मुझे समझ आया व्हाई वी वर डूइंग इट। Okay. तो अब मतलब वो एक बार कॉन्सेप्चुअली समझ आ जाता है तो उसके बाद मतलब यू डोंट टेंड टू फॉरगेट, सो नाउ आई नो दैट व्हाई वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। Because if you understand the things logical na, राइट then only राइट, because things never forget. बिकॉज वो मग अप करके या फिर जस्ट एक आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है. एक मिनट, हेलो। हाँ, yes. हाँ, तो एक्चुअली वही मग अप करके मतलब मेरे को बता दो ये स्टेप्स हैं, वो तो रटने में तो नहीं नहीं, ये स्टेप्स थोड़ी। कुछ नहीं होते हैं ऐसे. देखिए क्या है, एसएपी का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं ना, बिकॉज इस इंडस्ट्री में ना मुझे लगभग 13-14 ईयर्स हुआ टीचिंग में. राइट, मेरे पास कभी भी जैसे मैं इंटरव्यूज लेने जाता हूँ, इफ समबडी सेज आई एम गुड इन कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं ये बोलता हूँ उसको कुछ नहीं आता हो, बिकॉज हमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं सीखनी है, राइट, हमको लॉजिकली। कॉन्फ़िगरेशन के बैकएंड का लॉजिक समझना है, राइट, और या फिर हमें समझना है कि एक्चुअल एसएपी में किस तरीके से इसका यूज होने वाला है, इस कॉन्फ़िगरेशन का यूज होने वाला है. then we need to understand the need of the end user to implement the राइट. things or understand the राइट. things that बिकॉज वो। जो भी ये सिस्टम बिल्ड हो रहा है दैट इज फॉर द एंड यूजर. तो एंड यूजर लेवल पे बैठ के हमें पहले ये समझना है कि what kind of requirement having this company. Okay. 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 So our next topic is in the last class we have done this posting period and open and close posting periods. Now we'll do field status group. Just a minute. So field status group, the purpose of field status group is to differentiate the user screen as per the business transactions. Differentiate the user screens as per the business transactions. So generally, because in a routine basis, we users does so many different financial transactions, right? Like, एक minute, I started recording. Yes, like vendor invoice, vendor payments, customer invoice, payment, depreciation, asset purchase. So, because in every screen, let's suppose SAP has around 500 fields in all the different business transaction screens. जो business transaction screens है वो ये हैं, right? तो अब जो vendor invoice जब हम create करते हैं, ऐसी कौन सी information होती है जो कि vendor payment के time पे नहीं होती है? वेंडर पेमेंट के टाइम पे नहीं होती,
आपकी आवाज ना अभी भी थोड़ा सा कम आ रहा है। जस्ट एक बार आप अपना वॉल्यूम चेक करो, आई थिंक। अब आ रही है आपको? नॉट एग्जैक्ट। हेलो? यस, हाँ कुछ बेटर है। हाँ, ओके। ओके, सो ऐसे कौन से डिफरेंट इनपुट्स हैं जो इनवॉइस में रहते हैं और वेंडर की पेमेंट्स में नहीं रहते हैं? ऐसा कौन सा इनपुट रहता है? इनपुट एज एन मतलब हम बिकॉज अगर हम कोई वेंडर का इनवॉइस पोस्ट करते हैं, क्या क्या इनपुट सेंटर होते हैं उसमें, क्या क्या इंफॉर्मेशन हम कैप्चर करते हैं वेंडर इनवॉइस का के? नाम, हम्म, वेंडर का नाम, ओके। अमाउंट मतलब अमाउंट, बिलिंग इनवॉइस अमाउंट, ठीक है, और and what kind of a purchase is it, as in if it is a vendor then मतलब bill हम पे raise हुआ है, ओके। so हम वेंडर को जैसे क्रेडिट करते हैं, हम्म, वेंडर को क्रेडिट करते हैं और जो भी ठीक है, सर्विस हम ले और रहे हैं सर्विस उस को या एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, राइट? एक्सपेंस को डेबिट और करते क्या हैं। इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं वेंडर इनवॉइस में? हम्म, अच्छा, इन फ्यूचर if your vendor says I am expecting 5,000 rupees payment, but you are saying the payment is 4,500, how would you reconcile, and what basis you will reconcile the lines? on the basis of the invoice amount and Invoice, जो हम ऑलरेडी इनको हो सकता है कि एडवांस पेमेंट करी हो या ठीक फिर है, कोई ठीक है। पेमेंट ड्यू रही हो। अच्छा अच्छा, उसमें आप ये कैसे कंफर्म करोगे कि ये अमाउंट इस इनवॉइस में हमने इतना किया और उसने इतना किया? हाउ वुड यू एक्चुअली take that invoice number or invoice details and other? जो say we are posting an invoice entry, हाँ, when we are posting an invoice entry से previously also कुछ भी हमने सर्विस अवेल करी है और कोई परचेज किया है तो हमने वो इनवॉइस एंट्री पहले पोस्ट करी है, तो उसका एक इनवॉइस नंबर होगा। इनवॉइस, इनवॉइस नंबर, वो क्या होगा? इनवॉइस नंबर वुड बी जो भी इनवॉइस के ऊपर बिलिंग नंबर जो वेंडर कौन सा अपने नंबर तरफ होगा से, ये? हम्म, जो बिल नंबर होगा वेंडर का, किसका? वेंडर का बिल नंबर? इनवॉइस नंबर हाँ, जो भी इनवॉइस नंबर होगा वेंडर की तरफ से, मतलब वो ये, जो भी उसने हम पे बिल रेज किया है, दैट हम्म, बिल विल हैव अ नंबर। अच्छा, आप वाउचर कह रहे नंबर हैं हो कि गया वेंडर इनवॉइस जब नंबर। आपको एक इनवॉइस देगा, हम्म, उस इनवॉइस के ऊपर एक बिल नंबर होगा। राइट। वो तो जब हम उस इनवॉइस इनवॉइस को नंबर पोस्ट करेंगे, आप अपनी बुक्स में कैसे पोस्ट करोगे? और उसके अगेंस्ट में क्या कोई आपका भी कोई वाउचर नंबर होगा, कोई राइट, इनवॉइस नंबर होगा? यस, तो जब हम उस इनवॉइस को पोस्ट करते हैं तो वो जो भी एंट्री पोस्ट होती है उसका भी एक नंबर जनरेट होके आता है सिस्टम में। ओके, राइट। सो जो इनवॉइस नंबर है which is different in at the time of invoice posting, but there is no need to enter the invoice number at the time of vendor payment. वेंडर पेमेंट के टाइम पे वी विल बी रेफरिंग टू द नंबर, जिस जो ट्रांजैक्शन नंबर है बेसिकली उसको रेफर करेंगे पेमेंट के टाइम पे। एक्चुअली देखिए क्या है, वेंडर के इनवॉइस में वेंडर का इनवॉइस नंबर will be different from the vendor payment transaction. Right, because these two will be two वेंडर different की पेमेंट में क्या transactions. होगा? चेक नंबर, Right. राइट?
सो ये जो दो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस Okay. के जो डिफरेंट इनपुट्स हैं, ये अच्छा एक चीज और बताइए, सपोज सेम वेंडर सेम इनवॉइस नंबर सेम फाइनेंशियल ईयर, क्या पॉसिबल है? अगर हम उस पर्टिकुलर इनवॉइस की पेमेंट दो पार्ट्स में कर रहे हैं तो अच्छा, एक इनवॉइस नंबर एक वेंडर से विद इन ए सेम फाइनेंशियल ईयर रिपीट हो सकता है? रिपीट नहीं हो सकता, राइट बट रिपीट हाँ, नहीं हो सकता, बट हम उसको दो पार्ट में डिवाइड, मतलब ना दो ना, पार्ट मैं में पेमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ अच्छा इनवॉइस अच्छा, की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, इनवॉइस तो एक ही बार ही जनरेट होगा। राइट, सो एसएपी के अंदर फील्ड स्टेटस ग्रुप जो कंट्रोल होता है वो फील्ड्स की 4 लेवल पे कंट्रोल करता है। हम्म, सप्रेस, डिस्प्ले, रिक्वायर्ड, ऑप्शनल। सप्रेस, डिस्प्ले, रिक्वायर्ड, ऑप्शनल। सप्रेस का मतलब क्या होता है? हाइड। राइट, सपोज हमारा एक इनवॉइस नंबर है जो कि यहां पर एंटर होगा, एक फील्ड है जहां पर इनवॉइस नंबर एंटर होता है, बट वो इनवॉइस नंबर यहां पर तो रिक्वायर्ड होगा, बट यहां वो सप्रेस्ड होगा। हाँ राइट, यहां पर जो चेक नंबर होगा वो रिक्वायर्ड होगा, वो रिक्वायर्ड होगा। हम्म, बट यहां पर वो चेक नंबर सप्रेस्ड होगा। सप्रेस्ड। हम्म, तो ये यहां से हमारे फील्ड स्टेटस ग्रुप कंट्रोल होते हैं। राइट, एंड फील्ड स्टेटस ग्रुप at there are two level, header level, line item level. So हम जो अभी फील्ड स्टेटस ग्रुप की बात कर रहे हैं, so this field status group controls the line items, it controls the लाइन आइटम्स। controls the line items, right? So यहां पर हमारा जो हेडर है वो अलग तरीके से कंट्रोल होता है। वो हेडर होता क्या है? हेडर इज ए फ्रंट पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ओके, हेडर को हम लेते हैं जिसमें वेंडर का कोड, बिल नंबर, डेट, राइट। सो ये जो इंफॉर्मेशन हैं ये इंफॉर्मेशन। हेडर इंफॉर्मेशन है। लाइन आइटम होता है डेबिट क्रेडिट, मतलब क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। तो एंड द अभी जो हम अमाउंट। डिस्कस कर रहे हैं लाइन आइटम्स कंट्रोल की डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, राइट, राइट। सो फील्ड स्टेटस, दिस फील्ड स्टेटस ग्रुप कंट्रोल्स द लाइन आइटम ऑफ द fields. So this field status group variant having 4 digit, up to 4 digit that we can say, अच्छा, alphanumeric, right? And अभी जो हम कर रहे हैं उसमें ये लेवल नहीं होता है अभी के लिए, बट देर आर डिफरेंट मोर फील्ड स्टेटस ग्रुप इन एसएपी सिस्टम जहां पर आपको ये चारों मिलेंगे। तो अभी हम एक फील्ड स्टेटस ग्रुप वेरिएंट क्रिएट करने जा रहे हैं। आवाज, आपकी आवाज चली गई थी बीच में अभी। मेरी आवाज आ रही है? अभी गई थी बीच में, अब नाउ नाउ यू आर ऑडिबल। यहाँ थोड़ा सा बारिश हुई है काफी, यहाँ पे भी हुई है जरा, अभी भी हो रही है, बट इट्स रेनिंग क्वाइट हेवीली। वैसे थोड़ा नेटवर्क इशू है। SPRO, go to financial accounting, global settings, ledgers, fields, field status variant. First we'll create
field status group variant. So here it's a different uh, the sign for creating a new entry. Our company is APC, accurate. If we select this and go to field status group, go to new entries, now we'll create different field status group. Like first would be for expenses, that we enter AP01, right? So here we take expense, AP02, revenue, AP03, uh, customer posting, AP04, vendor posting, AP05, provisions, AP06, bank postings, AP07. What else we can have? Asset purchase, AP08, Sets. depreciation. Right. So ये there are different field status group. जहाँ पर if we double click on this, where you can see there are different tabs where we can go inside and change the status of the field. Suppress, Okay. required, and optional. If we are suppressing this, if we suppress these fields here in expense side, but in revenue, this is still in optional. Optional. इसको भी यहाँ कर देते हैं and then so this is the field status group, and there because it's a standard field status group in SAP, it's a 0001. This is G001. There are different like material consumption के लिए अलग है, बैंक अकाउंट के लिए अलग है, material अकाउंट के लिए अलग है, asset का depreciation is a different, scrapping is different, plant maintenance is different, revenue के लिए different है. See, so if we see this, all are suppressed. Which one? For a revenue account. Revenue. If we see the same in material accounts, so these are not all suppressed. Right. These are not suppressed one. So some are optional, some are required. One is required, Required. suppressed. So One is a the control of all the business transactions document line items. Line item of the business transaction documents are controlled through field status group. please. Where if we don't require any field, let's We will suppose suppress it. out of 500 fields, we required only 40 fields. In 40 fields, vendor invoice, we required only 10 fields, which we will make as a optional or required. But out of 40, 10 are in use, 30 we can suppress. In a vendor payment, we required suppose 25 fields, 15 will be suppressed, and out of 40, जो 25 हैं, those will be optional or required. So same as this. Right? So ये हमारा field status group का purpose है. Right. And this will also assign to the company code. And this is again at client level, Client level. which can be assigned to multiple company codes. Right. APC, APC. APC. Right? Close this. Close this. Now we'll go to document. Yes. Now we have one more important point. So we'll start discussing the document account type. Document types. Posting keys. Document number ranges.
5 account types. Yeah. Hmm. Document types are some standard document types: AA, AF, AB, SA, KR, RE, KZ, Mm-hmm. KG, DR, RV, DZ, DG, WE. These are some standard document types. The purpose of the document type, account type, posting keys, and document number ranges now we'll discuss. Mm-hmm. So the purpose of this document type of AA is for FA purchase. AF is for depreciation. These two are for JV. KR is for Vendor vendor invoice. invoice without PO. Okay. This is with PO. Okay. Vendor payment. Hmm. Vendors credit memo. Hmm. Mm-hmm. Customer invoice without SO. With SO. Customer Mm-hmm. receipt. EG customer credit memo. And this is for good receipt. ये कुछ standard हैं, right? So there are more document types in SAP system which are standard, but these are important and those we'll discuss. राइट और मैं इसका आपको पर्पस बताऊंगा कि कैसे आपको अगर नया क्रिएट करना है या इसमें कुछ चेंज या एडिशन करना है, so how you can do that. So account types are 5 that we already discussed. Document types controls the, मैं इसको यहां लेता हूं, header of the document. Number 1, it controls the field status of fields which are related to header side. Yes. Then it controls the number ranges of the document. And account type defines the business transaction. Account type defines the business transactions. चलिए इसको एक मिनट हम यहाँ लिखते हैं हम. Account type controls the
document type account type controls the document type and posting keys. Um, give me 5 minutes break, right? Sure. Yeah. Okay. Okay. So now the asset purchase AA is for asset purchase. So in a SAP system, this document type is control the header of the document. अब हेडर में क्या था जो हम डिस्कस कर रहे थे, वेंडर का कोड, बिल नंबर, डेट, Header, vendor code, bill number, date. राइट. It controls the field status of two fields which are related to header side of the document. वो fields कौन सी हैं? One is reference number, another one is document and a text. Right. So ये पर्पस है नरेशन एंटर करने के लिए. You can enter some narration. और ये होता है वेंडर इनवॉइस नंबर के लिए. राइट. हाँ. सो मैं कुछ अकाउंटिंग एंट्री मेंशन करता हूं यहां पर, देन विल अंडरस्टैंड अकॉर्डिंगली. एक्सपेंसेस डेबिट वेंडर क्रेडिट. कौन सा अकाउंट टाइप यूज होगा इसमें, इसमें इसमें और इसमें? Expenses debit. एक्सपेंस में कौन सा अकाउंट टाइप यूज होगा और वेंडर में कौन सा अकाउंट टाइप यूज होगा? So just ये अकाउंट टाइप मतलब ये वाला है ना जो जस्ट ऊपर है, ये जो कोड्स है इसी में से ना? नहीं, अकाउंट टाइप की बात कर रहा हूं मैं, इसमें से अकाउंट टाइप. अच्छा अच्छा, ओके ओके. सो एक्सपेंसेस विल बी GL, that is S. Okay. And this one will be K. K. Okay. What about the document type? So document type will be KR. Okay. Why not KRE? I am assuming without PO. Okay. चलिए ठीक है. You are right. So KR is expense debit to vendor. Right. Right. Now we'll enter another entry. Okay, so Okay. Let's discuss this. What would be the account types for this and this? So this will be GL, both of them. Both of are GL, right? Account type, document type. No. Document type will be
KZ. Hmm? Which one? KZ. KZ is for what? No, it will be JV. JV. KZ is for vendor payment, but Okay, JV is here we are for not which one? mentioning. Hmm? Hmm, Which one? just a second. I think will it be JV? Okay. SA. SA. Yes. Right. Okay. What about this one? This is same as top one, huh? KR. Right. Okay. What about this? Repair and maintenance, debit to electricity expenses. Okay. So maintenance. Is this an adjusting entry? Which one? This one, repair and maintenance expenses, debit to electricity expenses. ये accounting है क्या वैसे? Purpose क्या है इस accounting का? That is what I'm trying to understand. Is this any adjustment entry? Adjustment for what? Say, first, like any repair and maintenance with respect to any electricity setup, maybe, Mm-hmm. and that expense we are incurring from the uh, Hmm? not sure. अच्छा इसका document type क्या होगा? Okay, so this will again be S. S. Oh, document type. हाँ Okay, document document type. type. This will again be JV. SA. SA. Yes, so can we go? SA और Yeah, JV is SA. any one we can use. SA or AB मतलब ऐसे रहेगा इसमें. because it's And basically what a about the JV, right? account types? Yeah, account type. Sir, एक बार ऊपर जाएंगे so that I can refer to the Mm-hmm. list. Yes. So will be GL. Both of them will be GL. Okay. Okay. अच्छा ये accounting है क्या ये? Sir, I'm just trying to figure out. Hmm? That is what I'm trying to figure out. Okay. Okay. Actually, we have posted this transaction in electricity expense debit to vendor, Debit. Right. which is posted wrongly. Okay, so Right. we ये जो assume that post we have होना चाहिए posted this था, wrongly. yes, ये repair and maintenance में जाना चाहिए था, but by mistake we have posted in electricity expense. Oh, that is what I was saying. Is this an adjustment entry that we Okay. are doing? Okay. Adjustment entry. Yeah, yeah. Okay. Is there any other way where I can do this correction apart from this? So either we can reverse the entry Acha. if Okay. the wrong entry which we can Right. So you are which we saying, give. so we have posted this entry, first entry we have posted wrongly. Right, right, Either we can correct it by this way, so we can post the second entry right. and we The can correct entry make we the can post. correction, right? Hmm. So this is the correction entry. Hmm. Okay. Other way is we can second entry we can reverse. Other way I'm talking about. Mhm. And third entry would be the correction entry. Correction. So if we go with this way, Mhm. only two entries will get generated. Right. दो entry generate होंगी इस केस में. Correct. But इस केस में how many are there? 3 entries हो जाएंगे फिर. Right. So Right. what
what is the advantage and why these entries are happening? Why are we not restricting this type of entries? So suppose one user has posted this entry, Mm-hmm. and he is not authorized to post the reversal entry, Okay. Right. because in a SAP we have checks and controls. We Mm-hmm. cannot give all the authorization to one user. Okay. So the same user is posting the wrong entry, and the same one is reversing the entry. Mm-hmm. We don't allow. Mm-hmm. So this kind of reversal, we provide the access to his senior, Okay. right? Sometimes क्या होता है कि he sometimes scared. If I go there, right, वो मुझे डांटेगा, वो मुझे because torture करेगा, then I don't go and post this Right. transaction entry, Right. right? Because correction तो हो गई, Hmm. but what different report, right? If I Hmm. am just extracting some report, so Mm-hmm. what data I would not get if I post this entry, this one? Mm-hmm. What kind of reporting requirement I cannot fulfill if I'm posting this first, if I go with this first option? Right. So, that in respect of which probably bill number or Hmm. uh, invoice number we are making this No, entry. okay. मैं थोड़ा सा इसको रिफाइन करता हूँ. Mm-hmm. If I want to see at month end, so this expenses is made against which vendor, I cannot figure it out, Correct. right? But in this Mm-hmm. case I can do that. Yes. होता क्या है, मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि मैंने Right. इस पर्टिकुलर मंथ में इस एक्सपेंस में किस किस वेंडर से मैंने एक्सपेंस किया ये. Mm-hmm. दिस इज माय रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट. Mm-hmm. Other side is from from this vendor what kind of expenses I have done. Mm-hmm. So because both side they need the reports, Right. so that they can compare with the last month or last year, Mm-hmm. right? वो लोग एनालिसिस के लिए इसको यूज कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट. Correct. Mm-hmm. क्लियर? Mm-hmm. Right. So this entry will again SA. This is KR. So the document type controls the type of the document. So what kind of document that is? Mm-hmm. Now I'll make one more table here so that you can understand better. I take it A, D, K, M, and S. Here I mention KR, SA, DR, KZ. Okay. In KR, ओके मैं ऐसा करता हूँ, ऊपर से मैं कॉपी पेस्ट करके ले आता हूँ यहाँ से. KR is for what? Here is Vendor invoice without PO. without PO, right? Mm. And SA is JV. JV. DR is Uh, customer invoice without sales order. right. This is vendor payment. Okay. Now, if I say in vendor invoice, what different account types are used for posting this KR? मैं किस किस अकाउंट टाइप को यहाँ पर एनेबल करूंगा फॉर KR डॉक्यूमेंट? K, that is creditors. K is creditors, right? GL. Okay, ये तो बाय डिफॉल्ट, GL तो बाय डिफॉल्ट है. By default and materials. मटेरियल्स, ओके. क्यों करेंगे मटेरियल्स को?
Say we are purchasing something. Say if What else? Anything? Any other account um, type? I Can think you? fixed asset also, yes. Okay. Because when Can we we use? purchase fixed asset, we would vendor will generate an invoice for No. us. Can we use D here? Debtors, no, because vendor will be creditor for us. If we like, Is there any possibility where we can use? if our vendor and if our customer and the vendor are same by chance, Yes. If vendor and customer are same, then we'll use this account type as this account right? type. Say if it happens when we are in a trading company, I think, like Okay, uh, but we are taking it in this example. There is no vendor no, customer right, relationship. right. Which account type will use for SA? So we'll have debtors and creditors both. What is JV? Okay, definition of JV is if there is no customer, though no vendor, no fixed Oh, asset, right, no right, right, transaction, those are JVs. right, 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 right. Yes, yes. Now, So which account type will you will enable? there will be materials and GL. Why material? Say we're purchasing goods, so we will pass one entry like So, do we purchase without vendor? yeah, if we do a cash Okay, purchase, okay, right. But we'll take this only because in a SAP system we don't do like this. Because if we are buying some material without mm-hmm. vendor, it's not possible. Okay, Right. So only GL. only GL. So Okay, both line items, right, will mm-hmm. have S account type. Now, what about Okay, DR? okay. So this will be so debtors. Debtors, right? There will be materials and GL both, Okay, and there will be fixed assets also. If we say sell our fixed asset, okay, right. What about KZ? vendor payment. Hmm. So uh, creditors. Okay. Mm, there will be fixed asset also. Why fixed assets? If we purchase fixed asset from a vendor, No, we purchase, but this, what is this document type? okay, so yeah, so we'll pass an entry vendor account debit to bank. Vendor account debit to Bank. bank. Okay. So So there what will be would be no the other account type? GL. Okay. GL is by default. By default, it's there What else? in all the creditors. I said GL. I said. I think that's it. Okay. Good. Fine. So this is how this document type controls the different part, Right, I got it. right? Now we'll go to posting keys. Mhm. Posting keys controls the line item of the number one. Number two, it controls the field status same as field status group variant, right? And okay, right. Posting keys controls the line item of the document. Fine. Now there are different posting keys in SAP 01, 209. There are 9 posting keys 01 to 09. Account type is D. And what would debit and what would credit? This would be debit.
11 to 19, D is credit. K, debit. K, credit. 40, S, debit. 50, S, credit. 70, A, debit. And 75, A, credit. And 81 to 99 are for material, debit and credit. Those will not discuss today, right? So we are not discussing today. So we'll discuss these different type, right? Now, SAP has defined 9 different posting keys are for debiting the customer. So what different type of transactions which debits the customer? When the customer is buying something from us on credit, Sorry? when the customer is taking our services or purchasing something from us on credit, Okay. then we are debiting the customer. In case of sale, customer debits. Say it's a credit sale. Right. Credit sale, customer debit hota hai. What Right. different transactions where customer gets debit? Okay. So probably when there is a Huh? when there is a bad debt, If there is a bad debt. ओके अच्छा अगर बैड डेट होगा तो आप कस्टमर को तो फिर क्रेडिट करोगे ना Oh, they're writing off. राइटिंग ऑफ देन इन दिस केस यू आर जस्ट reversing the debit side, Reversing the right, correct. So right? we are So writing it off, that would correct. be credit. So we're What crediting other the customer. transaction where you can debit the customer? Okay. Can we make advance to customer? Oh yes. Possibility? Yes. करते As हैं in, customer को advance? correct. Yes. As in when the customer is making an advance payment. हाँ, customer making us the advance, right? But we don't. Right. But is there any possibility जहां पर हम कस्टमर को एडवांस पे कर रहे हैं या कस्टमर को पेमेंट कर रहे हैं किसी और केस में? That is, I think that's the same case of the vendor and the customer are same. ओके चलो एक केस हो गया बट एडवांस पे कर सकते हैं क्या हम कस्टमर को? ओके चलो मैं एक सिनेरियो देता हूं आपको. सपोज बीइंग ए स्मॉल कंपनी, बीइंग ए स्टार्टअप, you go to Reliance and ask, I want to supply some material to you and which are very critical material. Reliance बोलता है no आप लोग नहीं कर सकते हो. If you insist them and tell them I can give you the bank guarantee or I can give you some security, Okay. then they can allow you to supply your material to Reliance. Okay. So the case where you are making the advance payment to your customer. Customer, right. Okay. Right? क्योंकि अकाउंटिंग में कुछ भी हो सकता है. तो उस केस में क्या है, SAP ने 09, 19, 29 and 39 posting keys are giving for advances. Okay. 9, 19, 29, 39. Those are used for advance. Advances. Right. So is it just advances or advances to customers? No, 9 के केस में आप कर रहे हो, 19 में वो आपको कर रहा है. In case of posting की 19,
Mhm. So you are receiving the advance from customer, Receiving the advance. Okay. right? So all these scenarios of advances are covered within this. Right. ऐसे ही वेंडर के केस में अगर आप वेंडर को एडवांस दोगे तो 29 होगा, अगर लोगे तो 39 होगा. एक्चुअली एसएपी क्या कहता है? एसएपी कहता है देयर आर डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैपेंस with customer or vendors. So those are covered within these posting keys. अब ये भी हो सकता है कि not because we are not using all the 9 posting keys for customer, but SAP has given us, we have option to use. If there is a use, then we can do that. Mhm. Right? अगर यूज नहीं है, then SAP has given us, Mhm. you can just leave it, Mhm. don't use. ऐसे ही सपोज आप कस्टमर से जब कस्टमर से आप पेमेंट लेते हो अगेंस्ट इनवॉइस, तो क्या होता है? कस्टमर इज डेबिटिंग और क्रेडिटिंग? से एडवांस व्हेन लेते हैं तो कस्टमर मेक्स कस्टमर, अस द पेमेंट, हाँ तो कस्टमर को हम क्रेडिट करते हैं. क्रेडिट करते हैं. तो हाँ. पोस्टिंग की है 15, विच इज स्टैंडर्ड ऑफ एसएपी. ओके. अगर सपोज बाय मिस्टेक आपने कोई पेमेंट रिसीव किया, एक्स कस्टमर का था, वाई के अकाउंट में रिसीव कर लिया, आप रिवर्स करोगे उसको, राइट. तो 05 पोस्टिंग की यूज होगी. गॉट इट? सेम एज हियर. अगर हम कोई भी सेल करते हैं तो सेल के टाइम पे अब हम आते हैं वापस से इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो हमने यहां किए थे. इसको मैं डॉक्यूमेंट्स को यहां से उठाता हूं, वहां पर हम पेस्ट करते हैं इसको, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. राइट. सो मैं एक और ट्रांजैक्शन यहां पर नोट डाउन करता हूं. इसका डॉक्यूमेंट टाइप क्या होगा? इसका डॉक्यूमेंट टाइप विल बी DR. यार DR without sales भी order. दोनों यूज हो सकते हैं, Yeah, बिकॉज मतलब if it is with हाँ SO एक्चुअली क्या without था, SO. Yes. यहां पर केआर और आर यूज नहीं हो सकता है बिकॉज इसकी डिफरेंट ट्रांजैक्शन होती है. यहाँ पे राइट बिकॉज ये एक्सपेंसेस है. Right. No, actually, the accounting entry related, there is a big difference. एक second. मैं call करता हूँ. Sorry. So we cannot use RE here, but we can use DR or RV both, because because both of the document types are having same accounting entry. But in this case, there is a huge difference of accounting entry in RE. It's not that same entry happens through purchase order. Purchase order means MM. हाँ. Right? Sales order means SD. SD. तो हम लोग उसको करेंगे at the later stage. Okay. What account types will used here? So here it will be D. D. Okay. And here it will be S. Okay. यहां पर कौन सी पोस्टिंग कीज यूज होंगी? इसमें और इसमें कौन सा यूज होगा? Okay, so this will be 0129. 01209 यूज होगा फर्स्ट वाली Right, 01209. ओके. 01 स्टैंडर्ड एसएपी का. राइट. और इसके लिए Here be 50. 50. Perfect. Okay. 50. What about this? Okay, here it will be 40. Okay. Vendor? Vendor will be 31 to 39.
31 आपका सारा अकाउंटिंग टेस्ट हो रहा है आज। Sir, actually that's You good can because see how that's how accounting is very important for learning SAP finance. that is how I'll be able to relate to it because accounts तो फिर भी conceptually मुझे पता है, सब भी मुझे conceptually नहीं पता होगा, तो to relate to that I mean this You is won't quite believe, helpful. मेरे पास कोई पढ़ने आता है ना अकाउंटिंग, सॉरी SAP, Mhm. उनमें से 90% लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी कहीं से पढ़ के आए हैं, SAP पढ़ के आए हैं वो, Mhm. और अकाउंटिंग नहीं आती है। Okay, आप how do उनका they हाल manage? सोचो क्या होता होगा। And वो कैसे मैनेज हो पाता है? I नहीं mean, I'm होता है not मैनेज, तो मैं उनको बोलता हूँ कि 11th क्लास की DK गोयल, SN महेश्वरी की right, बुक को रेफर करो, right, basic. बेसिक। Mm. बिकॉज अगर वो होगा, मेरे पास आए थे 2 बच्चे आए थे आज से कोई 4-5 महीना पहले, जस्ट दे कंप्लीटेड देयर बीकॉम, Mhm. अकाउंटिंग में वो How हाल था, उनको वेंडर की इनवॉइस की एंट्री बनानी नहीं आती थी। so? But how is that possible? Because BCom, because I'm also BCom honors नहीं आता student. है And बिकॉज बहुत सारे तरीके quite हैं ना अपने बीकॉम extensive क्लियर करने होता के, है वहाँ तो. बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चीटिंग वीटिंग करके और इधर उधर से अरेंजमेंट करके उन्होंने अपना सब किया होगा। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने उनको बोला कि अगर आपको अकाउंटिंग में भी अगर सीखना है, अगर एक्चुअल SAP सीखना है तो पहले अकाउंटिंग सीखो। So that has to be there because otherwise ये मतलब दोनों चीज़ें नहीं होंगी ना, मतलब मेरे लिए it's like if only the ERP is new, at least conceptually मेरे को अगर basics कोई मान लो मैं भूल भी गई हूँ, कोई बता देगा तो मुझे वो याद आ जाएगा, मतलब I will be able वही है to ना, relate to it at least. एक्चुअली क्या है जोशी, अगर आपने ढंग से 11th 12th अपना बीकॉम एमकॉम किया है, ढंग से अगर किया, 11th 12th भी अगर आपने ढंग से किया है, अकाउंटिंग तो स्ट्रांग होगा आपका। So actually I don't know about other universities. I'm from regular, तो इसी तुमको बेसिक एंट्रीज नहीं आ रही है. मैं अकाउंट बीकॉम के लोगों को जितनों को पढ़ाता हूँ, बीकॉम एमकॉम को भी, उनको बेसिक अकाउंटिंग भी नहीं आती। इवन Quite जो लोग nice. टैली पे अपनी ट्रेनिंग लेके आते हैं उनको भी अकाउंटिंग नहीं आती है। मैं समटाइम्स अगर 4-5 साल कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं जेनपैक जैसी कंपनी में काम करके आए, वो भी सब भूल चुका होता है। सर भूल चुका होता है समथिंग, मतलब उनको याद दिला दोगे तो याद तो आ जाएगा हाँ वो तो कॉन्सेप्चुअली तो है, पता ही. बट राइट. जिसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, कभी हुए ही नहीं हाँ क्लियर, राइट. वो कुछ नहीं कर सकता। और ऐसे ही मोस्टली लोग होते हैं, बीकॉम वाले लोग ऐसे ही होते हैं मोस्टली, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं आई होते, एम बट वो सरप्राइज कर आई जाते एम हैं। सरप्राइज बिकॉज मुझे याद है कि अगर कॉलेज में क्लास नहीं भी होती थी तो भी हमको ट्यूशन जाना पड़ता था. हम्म। उनका पेपर इतना इजी नहीं, नहीं इवन होता है इवन सर. चलिए, आप कॉलेज का तो अलग, स्कूल में 11th क्लास में भी ढंग से पढ़े हो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अकाउंटिंग का बिल्कुल एक्चुअली सारा बिल्डिंग तो मतलब वही है, अकाउंटिंग बिल्डिंग सारी। राइट, मतलब वो जो जर्नल एंट्रीज हाँ, सबसे पहली चीज है जो सिखाई जाती है, लेजर सबसे पहली चीज है जो अब सिखाई उन जाती लोगों है. को दूसरे इंस्टीट्यूट SAP पढ़ा रहे होते हैं। राइट, इट्स वेरी डिफिकल्ट. हाँ, और वो हालत क्या होती है कि अकाउंटिंग आती नहीं है, SAP में कुछ समझ नहीं आता है, और पढ़ाने वालों को ये मतलब होता है कि कोर्स खत्म करो और स्टोरी खत्म। सर वो नहीं आएगा बिकॉज मैं यहाँ what I'm trying to do is I'm trying to relate to the ERP through accounts. राइट। तो देखिए, कोई भी चीज अगर आप अपने एक्सपीरियंस से या किसी को रिलेट करके अगर नहीं पढ़ेंगे ना, कोई भी राइट. ऐसा कोई कोर्स या कोई टेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, जब तक आपको उसका एंड रिजल्ट नहीं पता है, आप नहीं पढ़ सकते। एब्सोल्युटली. उसका एंड रिजल्ट समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये जो एंट्रीज हम समझ रहे हैं एंड रिजल्ट है, ऑल आर एंड रिजल्ट्स। करेक्ट. तो उसको रिलेट करके अगर पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। सर एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू दैट जो हमारी कल की क्लास, जो परसों की क्लास हुई थी ना, उसमें आपने मुझे जो 2-3 छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं वो मैंने, मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने पहले नहीं किया या नहीं देखा, मतलब चाहे मैंने एक आध बार किया हो, बट उस टाइम पे मुझे उसका लॉजिक नहीं समझ आया कि हम ये कर क्यों रहे हैं. इट्स लाइक मैकेनिकली आप किसी को बता दो कि ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, बट ये पहले क्यों करना है, ये बाद में क्यों करना है, तो ये हम कर ही क्यों रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी है. वो इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। और मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको मुझे मना करना होता है कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं आप लोगों को,
So because that also becomes quite difficult for you. I can understand क्योंकि अगर किसी को अकाउंट्स नहीं आती है, बेसिक जर्नल एंट्री नहीं समझ आएगी, क्या करेंगे आप? डेबिट क्रेडिट व्हाट टाइप ऑफ एन अकाउंट इट इज, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स जो वो नहीं आते हैं लोगों को, वो नहीं, दैट इज द बेसिक मेरे ऑफ साथ बहुत अकाउंट्स वो। सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे स्टार्टिंग में जिनको नहीं आता था, बट उन्होंने कॉन्फिडेंटली ज्वाइन किया एंड दे एक्चुअली मेड अप वेल। और आज उनका अकाउंटिंग पार्ट देख लो, जो उन्होंने अपने 5 इयर्स, अपनी 11 टू बीकॉम फाइनल ईयर में 5 इयर्स में वो नहीं सीखा, वो 4 महीने में अकाउंटिंग में भी 4 कर। महीने, राइट। बिकॉज हम लोग उस तरीके से पढ़ते हैं कि आपको एक्चुअल आप अपने रियल टाइम बिजनेस सिनेरियोस के साथ आप रिलेट कर पाए, अकाउंटिंग एंट्री के साथ रिलेट कर पाए। एसएपी तो Right. बहुत दूर की बात है, एसएपी कुछ नहीं है, पहले आपको अपना जो डोमेन है ना वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट। सो बिकॉज वो ईआरपी उसी के ऊपर बेस्ड है, मतलब हाँ, अदरवाइज जाओ उसी पूरे, मतलब अगर जैसे जो मार्केटिंग का बंदा है, जो एचआर फील्ड का है, वो भी ऐसे में अगर काम करेगा तो उसको अभी अपने फील्ड का पहले चीज क्लियर होनी चाहिए। डेफिनेटली यस। आपको तो डोमेन नहीं आता होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉर फाइनेंस डोमेन इज अकाउंटिंग, राइट, फॉर एमएम डोमेन इज परचेज और स्टोर टाइप ऑफ जॉब, राइट, एसडी सेल्स इज द डोमेन, राइट। एचआर, पीएम में प्रोडक्शन इज द डोमेन, यस एचआर में एचआर डोमेन है। देयर इज लॉजिस्टिक्स yes. आल्सो। तो ये हमारा अकाउंट, ये हमारा पोस्टिंग की है। द पर्पस राइट, ऑफ पोस्टिंग की इज टू कंट्रोल द लाइन आइटम, लाइन है। राइट। नाउ विल गो टू डॉक्यूमेंट नंबर रेंज। डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस क्या होती हैं? सो इट्स ए 10 digit numeric or alphanumeric, but mostly time we use numeric one. So it's a voucher number, Okay. right? First point. Second point, it is internal and external. Internal is numeric, this is alphanumeric. Fourth, define at company code level. Fourth, controls through document type. Sixth, each fiscal year, future fiscal year. See the difference now. So we have different document types like this. अब मुझे अगर अपने डॉक्यूमेंट को डिफरेंशिएट करना है बेसिस ऑन दी डॉक्यूमेंट नंबर्स, तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर इसको डॉक्यूमेंट नंबर देंगे। सपोज ये नंबर स्टार्ट होगा 11 से, 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 10 कैरेक्टर्स, राइट, राइट। इसको हम देते हैं सपोज 12, इसको भी देते हैं, और अकॉर्डिंगली हम इसको यहां पर ड्रैग कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक नंबर असाइन करेंगे। सपोज हमने इसको नंबर दिया 01, इसको दिया 02, या फिर इसको दिया हमने 11, देन 12, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव असाइन्ड टू ऑल दीज डॉक्यूमेंट टाइप्स। अब होगा क्या, जब भी कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा फिक्स्ड एसेट्स परचेज का, एफए परचेज का, तो उसका पहला नंबर होगा ये 11, और यहां पर होगा नंबर रेंज स्टेटस, एनआरटी, नंबर रेंज स्टेटस, सॉरी।
तो पहला नंबर जनरेट होगा ये. So as we create the second number would be 1, then 2 and so on. अगर कोई डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग हो रही है, डेप्रिसिएशन का कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट होना है, तो वो ये वाला पिक करेगा सिस्टम. अगर जेवी होगा तो इन दोनों में से कोई एक पिक होगा. अगर वेंडर इनवॉइस विदाउट परचेज ऑर्डर है तो 15 है, आरई अगर विद परचेज ऑर्डर है तो 16 है. अकॉर्डिंगली कस्टमर का इनवॉइस विद सेल्स ऑर्डर 20, विदाउट सेल्स ऑर्डर 19. ये हम अकॉर्डिंगली डिफाइन करते हैं सिस्टम. ओके, ये हम डिफाइन करते हैं. यस, ये हम भी डिफाइन कर सकते हैं, हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं. जो उसका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उससे हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. राइट? इससे क्या होगा? सो वी कैन डिफरेंशिएट द बिजनेस ट्रांजैक्शन और वी कैन आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शन बेसिस ऑन द डॉक्यूमेंट नंबर. मुझे पता है कि अगर नंबर 19 से स्टार्ट हो रहा है तो यार ये तो वेंडर कस्टमर इनवॉइस विदाउट सेल्स ऑर्डर होगा. तो जो भी आपने ये टर्म्स यूज किया, all these terms are used for reporting purpose to filter the data. ये डेटा को फिल्टर करने के लिए यूज होता है. So this is the first thing. Now we'll come to internal and external. यहां पर एक ऑप्शन रहता है SAP में एक्सटर्नल, राइट. तो यहां अगर आप इस पे यस कर देंगी तो सिस्टम क्या करेगा, जब भी इसका एसेट परचेज का कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा तो सिस्टम आपसे नंबर पूछेगा मैनुअल. आपको इस सीरीज का कोई भी एक नंबर असाइन कर देना है वहां पर, जो कि इन रूटीन ये प्रोसेस नहीं है. हर सिस्टम के अंदर, इवन टैली के अंदर भी वाउचर नंबर ऑटो जनरेट होता है. सो टैली नेवर आस्क्स टू गिव द वाउचर नंबर मैनुअली, बट द सेम एज इन SAP. But in a SAP system, we have option to generate the document number manually if you have selected this external. Okay. Right? तो यहां पर अगर इंटरनल होगा तो ऑटोमेटिक चलेगा, एक्सटर्नल होगा तो मैनुअल देना पड़ेगा, जो कि नहीं होता है जनरली. 99.99% इंटरनल चलता है. इंटरनल. Now we'll come to document level, define at document level, document company code level, sorry. So अब अगर सपोज आपको ऑडिट करवाना है, सपोज यू हैव 5 कंपनीज, आपके पास 5 पैन नंबर है, 5 पैन नंबर्स. दैट मींस यू हैव 5 कंपनीज. इन SAP you have 5 company codes. So all these company codes are audited by different company. Okay. Right? Now we take an example. Company X, company Y, company Z suppose. कंपनी X के अंदर जब कोई वेंडर का इनवॉइस क्रिएट होगा तो उसका पहला नंबर क्या होगा? वेंडर इनवॉइस विदाउट परचेज ऑर्डर, तो उसका पहला नंबर क्या होगा? वेंडर इनवॉइस विदाउट परचेज ऑर्डर, विदाउट विल बी 15. ये वाला. राइट, दिस वन. अगर Y कंपनी कोड में होगा तो पहला इनवॉइस. यस. सो इट विल बी 15 और लास्ट वाला 1 होगा. अच्छा, ओके. अब आपसे क्या ऑडिटर ये नहीं पूछेगा इसका 0 नंबर कहाँ है? इस Y कंपनी कोड का ऑडिटर आपसे ये नहीं पूछेगा इसका 0 नंबर कहाँ है? So if we have configured these 5 companies under one, no, there are different plans, right? क्या आपका ऑडिटर नंबर सीक्वेंस चेक करता है? हाँ, बिल्कुल करता है. करता है. अगर करता है तो 0 कहाँ है Y कंपनी कोड में? क्योंकि इसका ऑडिटर तो डिफरेंट है. तो ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा ना? 0 से ही स्टार्ट होगा. मैंने आपको बोला ना, डिफाइन एट कंपनी कोड लेवल. ओके. सो आई गॉट इट. सो एवरी सभी का ही ये सिर्फ हमारा डॉक्यूमेंट नंबर रेंज है, बट एवरी कंपनी विल हैव द सेम रेंज. ठीक है, गॉट इट. और ये डॉक्यूमेंट टाइप के थ्रू कंट्रोल होता है, ये हमने दे ही दिया यहाँ पर. बिल्कुल. राइट. नेक्स्ट, ईच फिस्कल ईयर, फ्यूचर फिस्कल ईयर. Each fiscal year means कि every year system starts the number series from 0.
But in future fiscal year, there will be a ongoing number. Ongoing. वहीं से continue होगा. Suppose in a year 2019, you have used a number. In next year 2020, this number will start from zero again. ये तो हो गया each fiscal year. If we have configured the system as per the future fiscal year concept, then the next number would be 5124. 24. It will continue from the last number. Yes, yes. उस केस में ऑडिटर को प्रॉब्लम नहीं है. But the recommendation of each fiscal year. But you have option to maintain at future fiscal year level as well. Right. Now, I have a question. Let's suppose you have 7 company codes. And you have been using SAP for last 6 years. So how many times one document number you can find in SAP system at max? Got my question? The question clear नहीं है मुझे. Okay. You have 7 company codes because your group company is having 7 company codes. 7 companies, yes. And they have been using SAP for last 6 years. Okay. So all these 7 company codes are using the SAP for last 6 years. One document, how many times you can find in your system? One document number you're saying? Yes, one document number 42. you can find how many times maximum in your 42. system? 42 times. How many? 42 times. 42. Maximum. Okay. Okay. चलिए. Document number, fiscal year, and company code. So there are 3 different level where you can identify your document. Okay. I say this. Suppose this is your document number. Correct. How many times you can find? Oh, in 1 year I'll find it only once, no? No, but I didn't mention year and company code here. How many times you can find this document number in your system? Once. No, you have 7 company codes and 6 7 years. companies, so 7 times, right? Huh? 7 times. No, 42 times. No, in 1 year, no? No, I didn't say. I haven't mentioned anything. Okay. Okay, right. 42 times. If I mention 2019, then how many times I can find this document number? 7. Maximum. 7. Yes, because you have 7 company codes. 7 companies. Yes. You entered the company code. Why? Now, how many times? Only once. Yes. So this is the way we maintain this document number ranges. This is the purpose of maintaining this document number ranges. Got it. Right, now we'll go to the system and we'll see all these things. हाँ, एक चीज और है. Account types are fixed in SAP system. We cannot change. There is no option in SAP system where we can change, we can delete, or we can add any of the account types. Right, now we'll come to document type. Document types are changeable, deletable, and edit. Even you can add as well more document types as per the requirement. Right. So we can make changes, we can delete the existing document type, we can add the new document types. Same as posting keys. We can delete, we can add, we can change existing one. Document number ranges we have to define every year. Right, now we'll see. Accounting, financial accounting, global settings, documents, document types. See, so these are the document types
actually few document types are created by other users, but Okay. most of the document types are standard given by SAP, like Predefined. AA, AB, AF, right? So first we see DR. See, so without vendor, all account types are Mhm. selected. So what is this sign? What we called this sign? This is a required field. No, actually this box is what we called this box. Hmm. This is called checkbox, Checkbox, yes. right? And checkbox can be applied multiple. Okay. एग्जाम्पल लेते हैं, आप अगर कोई अपनी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करने जाती है, Mm-hmm. या फिर कोई भी आप ऑनलाइन कोई फॉर्म फिल करती हैं जिसमें Mm-hmm. आपको डालना है आपकी एजुकेशन, Mm-hmm. आप अपनी एजुकेशन में डालेंगी आई हैव डन 10th 12th Mm-hmm. graduation, then post graduation, then this that. Mm-hmm. So you have to select multiple things, Right. but you have option to mention the gender. Right. It's only one option you can One select, option, yes. right? So that option called radio button, Okay. जो कि सर्कल में रहता है, Mm-hmm. right? But this check boxes can be selected multiple at a time. Multiple. तो अभी मैं आपको नेक्स्ट, Okay, got it. जहाँ पे हम multiple options select कर सकते हैं. यस ये चेक बॉक्स बोलते हैं इसको. Right, right, right. इसका काफी यूज होता है एसएपी के अंदर, Correct. इवन टेक्निकली भी यूज होता है काफी. Mm-hmm. सो दिस इज द नंबर रेंज जो हमने यहाँ पर Mm-hmm. दिया था, ये वाला, हाँ. राइट? अब इसके बैकएंड पे ये नंबर कहीं डिफाइन होगा, वो हम देखेंगे. सो फर्स्ट दिस, और ये दो फील्ड हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, रेफरेंस नंबर एंड डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट. रेफरेंस नंबर हम इनवॉइस नंबर डालते हैं, डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट में हम नरेशन डालते हैं. Right. नाउ विल कम टू दिस नंबर रेंज इंफॉर्मेशन. Will enter the company code APC. APC, but will not find any number series here. हम यहां पर ये नंबर सीरीज डिफाइन करेंगे. ओह सॉरी, ओके हमें ईयर भी लेना था ना. If you enter the year this, then it would be each fiscal year. अगर आप ये डालेंगी तो फ्यूचर फिस्कल ईयर. Future fiscal. तो हम ईच फिस्कल ईयर लेंगे. राइट, और एक यहाँ ले लेते हैं हम 01. ये हमने नंबर रेंज क्रिएट कर दिया. राइट, सो ये हमारा डॉक्यूमेंट टाइप है. राइट, नाउ विल गो टू नेक्स्ट DZ. सी कस्टमर एंड GL. Because as we have discussed, the document type customer receipt, customer payment, right, only used customer and GL. Yes. no other account types we use as per the accounting things, right? We'll go to KR. Go to KR. This one, without customer, all are selected here. Right. In KZ, so only vendor and GLs are selected. Now we'll go to next document number ranges. We have already created those number ranges. There are two options to create, either go with that way or this way. And document number are created at company code level because we have mentioned the company code here, which is defined at this level. This. Now we'll go to posting keys. We'll select first posting key, this. So these are the radio buttons. Right, where you can only select You can one select option. only one. So debit customer or customer, account type is D and debit credit is this.
and sales related. So this is this posting key is a sales related posting key, and if you reverse this, so 12 number जनरेट होगा. बैक करते हैं, 9 पे आते हैं. इसमें स्पेशल जीएल का डिफरेंस है. इसका 19 इसका रिवर्सल है. देखिए 9 का 19 डेबिट और कस्टमर, और इसका भी फील्ड स्टेटस है यहाँ पर. ये वही है जो हमने फील्ड स्टेटस ग्रुप में किया था. इसको भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर. आप इसको थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ेंगी तो बेटर, आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा. देन विल गो टू पोस्टिंग की 19. सी स्पेशल कस्टमर क्रेडिट एंड रिवर्सल इज 9. सो ये सब एसएपी के प्री डिफाइंड कीज हैं जिसको आप यूज कर सकते हो. नाउ विल गो टू 31. दिस इज अगेन सेल्स रिलेटेड, बट ये है परचेज, बट इसको एसएपी सेल्स देखता है. Credit, vendor, or reversal is 22. We'll go to 40. 40 is debit, GL account, and 50 is reversal. We'll go to 70. Debit, asset, and 75 is the reversal. And now we can see this. Some are for materials. See, ये materials के लिए use हो रही है. ये भी कुछ GL के लिए use होती है, inventory taking और वो. 89, 99, so these are also for this. But ये जो purpose है 81 to 99 का, ये SD, MM, PP है actually. That's what I used, MM material. Right. So ये हमारी posting keys है. And so here we have seen the document type, posting keys, and this document number ranges, right, and the account types. So this is all about for today. Okay. Right, now we'll discuss. I just give you some topics to do some homework. Right. Tolerances. 1. And give me one more minute. I just check what I have covered in other class. Right. So the same thing we have done. So will you will do it this tolerance, right? And then chart of accounts, GL account group, retained earnings account, right? So these 4 topics आप इसको थोड़ा सा एक बार सेल्फ स्टडी कर लो इस पे. Right, you have book and you can go through that. Yes. That I'll do. So when would be the next class? Next class हम weekdays में करेंगे अब. Most probably on Tuesday or Thursday, 2 days. ठीक है. And around 6:30. Yeah, absolutely. ठीक है. Fine. Okay. Okay. Bye bye. Okay.